The topic of discussion is alcohols and phenols, and the subtopic is alcohols. Let's discuss alcohols in detail. Alcohols are those compounds having hydroxyl functional group, thus they are represented by a general formula ROH, where R represents alkyl group while OH represents hydroxyl group. They are classified into monohydric alcohols, polyhydric alcohols. Monohydric alcohols are those which contain only one hydroxyl group, while polyhydric alcohols are those alcohols which contain 2, 3 or more hydroxyl groups. So, monohydric alcohols are further classified into primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. Thus, the primary alcohols are those compounds in which carbon-containing hydroxyl group is not further bonded to any other carbon atom directly, while in secondary alcohols, carbon-containing hydroxyl group is directly bonded with two carbons, while in tertiary alcohol वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो डायरेक्टली तीन कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना रहा होता है. So here are the examples of primary alcohols in which hydroxyl containing carbon atom is directly bonded with one carbon atom, like ethanol, propyl 1-ol, and 2-methyl propyl 1-ol. Next are the examples of secondary alcohols in which hydroxyl containing carbon atom is further bonded with two carbon atoms directly, like 2-propanol, 2-butanol, and 3-propanol. While the examples of tertiary alcohols are 2-methyl 2-propanol, here carbon bearing the hydroxyl group is further bonded with three carbon atoms. And in 2-methyl butane 2-ol में जो कार्बन एटम जिसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर बॉन्ड करा है तीन कार्बन एटम्स के साथ, this one and this one. So that's why they are termed as tertiary alcohols. Here is a practice MCQ. Isobutyl and isopentyl alcohol are primary alcohols, tertiary alcohols, secondary alcohols, and the last option is all of these. And the correct option is primary alcohols. Another question is identify a tertiary alcohol, and the options are 2-pentanol, 2-methyl 2-butanol, 2,2-dimethyl 1-propanol, and the last option is 3-methyl 2-butanol. And the correct option is 2-methyl 2-butanol. In the upcoming slides, we will discuss about the nomenclature of alcohols. So, first are the common names, and then we will discuss the IUPAC names. So, lower and simple alcohols are known by their common names, usually. We simply add alcohol to an alkyl group like methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol. For example, CH3OH, this is methyl group, it is alkyl. इसके साथ हम simple alcohol लगा देंगे, it would become methyl alcohol. And this C3H7 is propyl group. So इसके साथ हमने simple alcohol add किया, it would become propyl alcohol. So for assigning a compound an IUPAC name, we will first choose the longest chain of carbon atoms, that is taken as parent chain. Then we will replace E of alkane by O. For example, C5H11OH. This is pentane और pentyl. हम लोगों ने उसका अल्केन का जो E है उसको रिप्लेस कर देना ओल से, सो पेंटेन से बन गया पेंटानोल. Similarly, C2H5, it is ethyl or ethane. So जब हम लोग E को रिप्लेस करेंगे ओल से, it would become
ethanol. सो द सेकेंड सिनेरियो इज कि अगर OH जो है वो चेन के दरमियान में अटैच है तो फिर हम किस तरह से नंबरिंग करेंगे. द कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड वेयर कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द चेन so that OH group gets the least possible number. अगर OH ग्रुप चेन के दरमियान में है तो हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से OH ग्रुप जो है उसको लीस्ट नंबर आए. फॉर एग्जाम्पल 1 ब्यूटानॉल में OH इस साइड पे है, हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे CH3 से. वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम CH2 1 2 3 एंड देन 4. सो इट वुड बी 1 ब्यूटानॉल. सिमिलरली हियर जो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे ना कि लेफ्ट हैंड से. अगर हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे तो दिस वुड बी 1, CH2 वुड बी 2, देन इट वुड बी 3 और ये 4 होगा. लेकिन यही नंबरिंग अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो दिस वुड बी 1, यहाँ पे 2 आएगा. जबकि जब हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 3 आ रहा था. सो दैट्स वाई राइट साइड से स्टार्ट करके वी विल कॉल इट एज 2 ब्यूटानॉल और सेकेंडरी ब्यूटानॉल. Another scenario is कि अगर हमारे पास OH ग्रुप्स एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, then how we will name it. If one or more groups are attached, we will use suffix diol, triol, etc. For example, here is a compound जिसमें OH जो है वो 2 दफ़ा है. So it will be 1 and then 2. So 1 2 इथेन डायोल, क्योंकि 2 कार्बन हैं उससे आ गया इथेन. नंबरिंग में आया 1 and 2, क्योंकि 2 दफ़ा OH था तो हम इसको कह देंगे डायोल. ठीक है. एंड सिमिलरली हियर यहाँ पे 3 OH हैं, जब हम इसको नंबर करेंगे 1 2 and then 3. So it would be 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल. प्रोपेन किसकी वजह से आया? क्योंकि 3 कार्बन एटम्स थे. और ट्राई किसकी वजह से आया? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे. सो अगर हमारे पास एक से ज्यादा ग्रुप्स होंगे देन वी यूज सुफिक्स डायोल और ट्रायोल. सो अनदर सिनेरियो इज ऑफ अनसैचुरेशन कि एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा. देन हाउ विल नेम द कंपाउंड. The unsaturated alcohols are numbered in such a way that OH group rather than the point of unsaturation gets the lower number. हम इस तरह से उस कंपाउंड का नंबर करेंगे कि OH ग्रुप जो है उसे लोएस्ट नंबर मिले rather than कि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर असाइन करें. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है. सो बजाय हम इसको लेफ्ट साइड से शुरू करें कि इसको हम 1 दें और इसको 2 दें ताकि जो डबल बॉन्ड है उस पर 2 आए और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे इस तरह से 4 आएगा, ये गलत होगा. हम इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे 1 2, इस तरह से जो डबल बॉन्ड है उसको 2 मिल जाएगा और हाइड्रोक्सिल को 1 मिलेगा. अगर हम उसको लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो हाइड्रोक्सिल विल गेट 4, जो कि गलत होगा. सो इसको हम नंबर करेंगे राइट साइड से 1 2 3 एंड 4. सो 2 ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन डबल बॉन्ड की वजह से आया, और 1 ओल. द नेक्स्ट सिनेरियो इज कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं. हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही है, उसके साथ एक और फंक्शनल ग्रुप भी है. तो फिर हम किस तरह से उसे नेम देंगे. When hydroxyl group is not preferred functional group as hydroxy acids के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेन ग्रुप होगा. सो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो सब्स्टिट्यूट नेम हाइड्रोक्सिल इज यूज्ड एज प्रीफिक्स टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ OH. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड. सो इसका हम नाम देते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. यहाँ से हम कार्बन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ये 1 आ गया और ये 2. सो यहाँ पे 2 पोजीशन पे चाहे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. सो 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड. The next are the reactions of alcohols. Alcohols react with reagent in 2 ways. Reaction in which CO bond breaks, reactions in which OH bond breaks.
विच बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट. दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, एक वो रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक करेगा. ये डिपेंड करेगा रिएजेंट पे जो अटैक करेगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा. So if the attacking reagent is a nucleophile, then CO bond will break. ठीक है, OH जो है वो सेपरेट हो जाएगा. बट if the attacking reagent is an electrophile, तो फिर OH bond break होगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा. So this was all about the lecture. I hope you people have understood it well, and thank you so much.